Question number 5. In the given circuit diagram, the currents I1, I4, I5, these currents are given. The currents I2, I3, I6 respectively are. तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें हमें ये कुछ करंट्स दिए गए हैं, कुछ करंट निकालने हैं और रेजिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. तो बहुत सारे करंट्स दिए गए हैं, बहुत सारे करंट्स नहीं दिए गए हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई, तो ऑब्वियस है कि हम कोई भी KVL या इस तरीके के मेथड्स में नहीं जाना चाहेंगे. और क्योंकि कई सारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में से कुछ करंट गिवन है, तो हमारा जो यहाँ पे पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए किरचॉफ्स करंट लॉ. इट इज़ क्लियर कट केस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ. तो वी कैन अप्लाई या वी विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ at various junctions to find the unknown currents. Let us make the diagram. So this resistance are having unknown values. Let us represent the currents which are given. So we are given I1 and I1 is this current and it is given minus 0.3. That means it is in this direction 0.3. It is going like this. I4 we are given and I4 is this current and this current is 0.8. Next I5 is given and I5 is this current and I5 is 0.4 ampere. We have to find this current I2. We can apply KCL at this point. The current coming is equal to current going out. Coming current is I2 and going current is 0.8 and 0.3. So it is 1.1 ampere. So I2 is 1.1 ampere. Now we have to find I3. I3 is this current. So I3 is this. So current coming at this junction is 0.8 and going out is 0.4 and I3. Applying KCL at this junction, I3 plus 0.4, this would be equal to 0.8. I3 is equal to 0.4 ampere. It is a very easy question. I6 is this current, and obviously this is the current which will pass through this wire and this wire. I6 is definitely equal to 0.4. So we have to select the correct option. I2 is 1.1, I3 is 0.4 and I6 is also 0.4. The correct choice is option number 1. Now question number 6. A particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from the point A as on the figure. The point A is at a height h. So this is height h. From point B, the particle B slides along the frictionless surface when the particle reaches the point B. Its angular momentum about O will be. तो O के about angular momentum निकालने के लिए हमें पहले यहाँ की वेलोसिटी पता करनी चाहिए कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी जब ये 10 मीटर नीचे आ चुका है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब ये था तब इसकी वेलोसिटी 5 के इक्वल थी. यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद में वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम यूजिंग R cross P. So let us solve this question. Question number 6. The track is something like this. Initial velocity at this location is given as 5. You have to find velocity at this location. To find velocity at this location, we should apply conservation of energy. So applying conservation of mechanical energy. नीचे आने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा. तो इट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू इनिशियल 5 स्क्वायर. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg इंटू चेंज इन हाइट एंड दिस हाइट इज 10 मीटर. So it is 10. We can find the velocity from this equation. This m will get cancelled. V square minus 25 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो this is 200, this is 100 and it will give 200.
V square is 225 and V will be 15 meter per second. Now V is 15 meter per second. Now calculation of angular momentum. Mass is given as 20 gram. So we have to calculate angular momentum about this point 2. For angular momentum calculation, we can use L is equal to R cross P. From here we can write it is a RP sine theta, or P R perpendicular. And obviously R perpendicular is this distance, total distance is 10 plus 10, 20. And momentum at this location is mv. It is simply mv r perpendicular. The value of mass is 20 gram, that is converted kg. Velocity is 15 and this r perpendicular is 20. This 2 0 are cancelled. It is 60 by 10, answer is 6. So the correct choice should be the option number 2.